This is cloud computing. You connect to internet, things work. Basically that, right? So बीच का all of this is abstracted. कौन सा server, कौन सा network, कौन सी security, कहाँ बिजली, क्या तार, क्या disaster recovery, right? All of this is all taken care of by the cloud provider. Right? This is what essentially cloud computing is all about. Very basic and basic. Why is it called cloud computing? अच्छा, कितने लोग यहाँ से एमिटीज हैं? नहीं खड़े कर सकते हो हाथ, कोई ऐसे? मैं भी एमिटी से हूँ, तो इसमें कोई वैसे तो शर्म वाली बात है, पर चलो। तो एमिटी नोएडा पहला, जयपुर, मानेसर, ऐसे करते करते उन्होंने 12 खोल लिया है। तो बेसिकली जब इन सब का अमेज़न जब कनेक्ट होता है तो ये इनसे क्लाउड बनता है। ठीक है, बट उसके एडवांटेजेस हैं। पहले तो 12 आप एमिटी खोल सकते हो उससे, बट आप स्टार्टअप भी चला सकते हो और बहुत सारे। तो दिस इज समथिंग दैट आई इनहेरेंटली बिलीव, राइट? कि इंडिया में इतना ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ, I mean, internet is one of these things, right? That connects you to the service provider, Airtel, Jio, Vodafone, right? Whatever the service provider. That is one connection. But then for me, मेरे को तो infrastructure चाहिए, right? So for cloud, the thing that I love about cloud computing is that this is infrastructure, right? If you want to buy a house, there is no way you can go without buying bricks or cement, right? And cloud is equivalent to building that in today's age. You can still do that even if you are in the most raw, let's say, natural resources mining business. Right? You still need cloud computing, and that is why cloud helps you scale. So when I think Paul Graham ka hai, right? The only difference between a business and a startup is the value of scale, and cloud computing enables that. Second thing is that machine learning is a commodity today, and we talk about it as a phone. We use Google Assistant, Maps, a lot of these tooling, even from other companies like Facebook. There's a lot of tooling coming out, and cloud computing makes that possible because all of this computing power is available at a whim. नहीं मेरा मन था तो मैंने सोलापुर की मशीन खड़ी कर दी है। मेरा मैनेजर पूछ रहा है कि तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है, बिकॉज मैं कर सकता था। उससे one of the advantages that you get out of cloud computing is कि all of this electricity etc is taken care of by the cloud provider. My first job, right? हम लोग रोज रात के 8 बजे के आसपास we were observing an outage, और हम हमेशा सोचते थे कि outage क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रात के 8 बजे बंदा शिफ्ट लगाने आता था वो तार खींच देता था और अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लेता था, क्योंकि उसको मस्त मजा आ रहा था उसमें। Then cloud computing takes care of, so there's redundancy in, let's say, electricity, there's redundancy in cooling, there's redundancy, let's say, storage, output, and then all of these things are managed for you. So you don't have to do this, right? Next time, let's say, CIO or CTO tells you that cloud is expensive, they are not counting costs जो अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, जो बिजली का खर्चा जा रहा है, जो वो इतना कूलेंट चला रहा है पूरा दिन बैठ के, राइट? Those costs are not counted. And that is why it turns out to be expensive. And also, right, you don't want to scale. मतलब अगर 4 VM में चला दो अपने लैपटॉप पे चला दो उसमें, but then if you really want to scale, you don't know what the demand would be, and we'll talk about all of these aspects coming. So yeah, cost is one of the factors that I can tell you counts a lot. Like cloud सस्ता हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है, right? You have to build for it. अपने आप तो नहीं होगा. And of course, because I can do anything, मतलब अगर मेरे को यहाँ तक आना था तो मैं मर्सिडीज में भी आ सकता था, बट मैं अपनी गाड़ी में आया क्योंकि वो सस्ती पड़ रही थी। तो you have to optimize for a lot of things. You have to tune, you have to fix. Cloud में security is kind of taken care of. Shared responsibility. आज पूरा ट्रैक सिक्योरिटी पे बेस्ड है। आई टेल यू समथिंग, बीच में ना कम्यूटल पे आई थिंक मे बी आई कैन टेल दिस, नो मतलब, बट बेसिकली आई व्हाट
व्हाट आई कैन टेल यू इज कि कुछ कुछ हो रहा था, राइट? एंड हम ऐसे कुछ बात कर रहे थे कि ये एक तरह का डीडोस अटैक है, राइट? तो ये कोई जबरदस्ती बंद करने की कोशिश कर रहा था बिकॉज खाली बैठे हैं लोग और कोई काम नहीं। तो उन्होंने बोला डीडोस, तो दो टेकीज हैं पूरे ग्रुप में और बाकी सब ऐसे जिनको कोई मतलब नहीं है। तो डीडोस का इवन के हिसाब से डेफिनेशन है दुख, दर्द और संकट, which I think is absolutely true. So cloud takes care of some of that, right? But again, you have to pay for it. आपकी हार्ड फिजिकल सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी गार्ड आपके डेटा सेंटर के बाहर आएंगे। देन देयर आर let's say security boot level पे, OS level पे, VM के, and VM के level पे, hardware level पे, there's a lot of security mechanisms for what we can talk about this. And then of course over the course of the day there are a lot of sessions based on security, so that is keep running. ये कुछ 2-3 स्लाइड्स में से जिनमें मीम नहीं है एंड इसकी कुछ सेंस बन रही है। तो बेसिकली क्लाउड इज अबाउट largely 4 models, right? 3 models: IaaS, PaaS, and SaaS. Normal enterprise IT में what you see here on the most right hand side, you have to take care of all of these things. मतलब डेटा सेंटर बनाना, उसका वेयरहाउस में जगह देनी, उसके सर्वर लेकर आने, उसकी नेटवर्किंग, तारें, इसने बैठ के क्रिम्पिंग करी है क्या यहाँ पे? है ना? तो you understand that this is a lot of effort. स्टोरेज पिक करनी, कौन से रन पे कौन सा रेट, सब उसको फिक्स करना, बैकअप ड्राइव, ये सब, राइट? एंड ऑल द वे गोइंग अप। और यहाँ तक तो इस लेयर के बाद तो लड़ाई हो जाती है ना? ये वाला क्यों दे दिया मुझे, राइट? तो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन दैट हैपेंस, वर्चुअलाइजेशन एक्सेट्रा, कौन सा ज़ेन चलाना है, VMware चलाना है, हाइपर चलाना है, क्लाउड टेक्स केयर ऑफ सम ऑफ दिस. So if you're running an IaaS model, the lower layers are taken care of by you, by the cloud provider, and you as a customer only own the top layers, which is operating system, databases, security, and applications. PaaS में we'll talk about what services are covered. PaaS में there are customer managed में सिर्फ application आता है, security से लेकर data center तक everything is covered in PaaS, right? And SaaS में application भी उनकी होती है. तो good example of PaaS would be Firefox, and इसका compute engine कह लो, या कोई भी आप किसी को कह लो, या Azure कह लो, right? And SaaS में G Suite, yes, Drive, right? Like a lot of these calendar, कुछ भी, है ना? Google Workspace, that is also. Salesforce, right? Salesforce is the story in being the first SaaS platform responsibility model, and depending on आप किस layer पे हो, IaaS पे, PaaS पे, SaaS पे, varies. तो जो blue वाला एरिया है वो उस केस में Google takes care of it, और उसके ऊपर का सारा you as a customer will be taking care of it, right? And that is why a shared responsibility model is really important. Tushar has a session about shared fate, and that would be like very interesting to talk about. But yeah, you'll understand more on how you operate in general. One of the other advantages of just using Google Cloud is that if you're in an organization that has sustainability goals, you can immediately migrate to Google Cloud and at least cut down on your carbon spread to zero, because effectively Google has been carbon neutral since 2007, and 2018 I think we're running on renewable energy, almost like completely renewable energy. 2030 तक we'll go. So this is the easiest way for any organization. So at least जो आपका cloud का या जो computing का जो आपका carbon footprint है, the best way to reduce it. This is a tweet from Urs, who's the SVP, and Urs was the 8th employee of Google जिसने सारा बनाया है. So Urs का पूरा दिमाग था जिसमें ताकि how can you run massively scalable systems at 50% cost or at 50% power utilization, and that has continued. So this is a very old tweet, approximately 2.5 years old now. But then while Google has grown a lot of time across a lot of these years, the power utilization only went for like 10% in high. So that is like a really important, and that continues to be so. We are continuing to like provide details on the कौन कितना आपके कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट हो जाता है, कौन सा डेटा सेंटर सबसे लो कार्बन यूज कर रहा है,
So if you want to run a batch job, why not run it in a low carbon footprint wala region, because it will also be cheaper, right? Batch job is uh, Google Cloud, one of the things that I personally like is all open source, right? So मेरे को I can be a developer and I can still continue to use. मेरे को ये problem नहीं है कि यार मैं lock हो जाऊँ, because a lot of this is built on open source. Uh, इतने सारे मुझे भी नहीं पता. Android Beam is for data flow, and you can take it on any Spark cluster that you're running. Chrome, Dart, right? All of these are Google open source technologies that you can continue to use. But largely, I think people know us for this. People know Google for this. TensorFlow, 90% of world, machine learning production systems are running on TensorFlow. That is open source. Kubernetes again is open source. We talk a lot about it, but then we also don't realize these importance. Right now, Istio also has entered CNCF. Bringing that innovation and taking that open source takes a lot of effort. किसी ने वो Kubernetes वाली documentary देखी है? Right? तो उसमें you realize कि they had this, उसमें वो लोग बात करते हैं कि how much effort it took for them to take it to Eric, and then Eric kind of said कि हाँ कर सकते हैं, right? Because he realized this important कि हाँ which internal engineering it needs to be out, and that continues to happen again and again. उससे उस वाले डॉक्यूमेंट्री में ना एक पॉइंट ये भी था कि जीके ही जब सबसे पहले जब when it launched in 2015, तो Niantic was, I think, one of the earliest customers, and I think it was Joe Beda who was strolling in the park and लोग अपने Pokemon catch करना चाह रहे थे Pokemon Go पे, और वो सारा का सारा जीके पे चल रहा था, जीके ही आगे. And it is really important to acknowledge कि वो उसको 0 से 50 million यूजर लेके जाने में सिर्फ 19 days लगे. So the platform has to be scalable to that extent that it is able to do it, right? So that is a real advantage in terms of scale a lot, right? So 50 million users in 19 days, अब तो बहुत ज़्यादा है ना, but then back in 2015, 7 years ago, when Kubernetes के launch होने के बस एक साल बाद, it is such a mature platform that takes a lot of effort. Yeah, we were talking about PaaS, right, in the beginning. App Engine is a PaaS platform. आप अपना code लाओ और चलाओ. In fact, App Engine was the first Google Cloud offering back in 2008. So, and it was the first serverless offering. मतलब मैं जब अपनी पहली जॉब में था back in say 2015, 16 something, right? लोग अब तब भी VMs, idea of VMs was still ramping up in like a lot of organizations कि आप एक physical server से आप virtual server में जा सकते हो. And I have still worked with a lot of customers who have physical servers running, who have mainframes running, and that is a lot of headache for them to manage. And imagine back in 2008, Google कह रहा है कि नहीं यार कोड लिख दो और हमारे पास चला दो. So I think the idea was way ahead of its time, very honestly. And App Engine is a backend, is a platform as a service, so you can still write your code in, let's say, a lot of languages: Ruby, Python, Go, PHP, .NET Core, I think. Yeah, so right, so all of these are supported. You can still bring your code. It will run. It will just run, right? You don't have to take care of scaling. New York Times, I think, runs on top of App Engine. I'm not sure. Maybe Firebase or App Engine, either of these. But then, a lot of production grade workloads continue to run on App Engine, which is like, और वो 2008 से चल रहे हैं. Like, so there are really interesting use cases that you can build out of. Firebase is backend as a service. So I mean, I'm sure like a lot of people use Firebase, but then उसमें आपको एक backend मिल जाता है, आप deployments of databases use कर सकते हो, right? There are other advantages with regard to hosting your mobile apps on Firebase. That is like a great advantage. But हाँ, आपके जो Google Cloud के जो functions हैं, आपका basically every Firebase project that you have is also a Google Cloud project. तो आपको Firestore में आप जाओगे तो आपको same data उसमें दिख जाएगा. So if you have an application that generates data from, let's say, a Firebase, you can also access it via a compute engine, Cloud Run, or whatever platform that you're running on, right? Given that you have sufficient access to it. Cloud functions आपके same रहते हैं. They are different, but you can still use them. तो उसमें आ जाएगा कि हम Firebase का function है या Cloud function है, Cloud पे बना हुआ है, but then there are like different advantages to both of them. BigQuery का data आपका सीधा उसमें जाता है, right? So there are a lot of advantages with regards to leveraging Firebase. And
Compute engine is our IaaS offering. So IaaS may compute storage network VMs. All of this is offered in compute engine, and then a lot more. But then this is like basic Dabbai, but fancy form. And G Suite is which is called Google Workspace now. Is our SaaS offering. Is how so all three platforms largely how Google operates that that yeah, I mean Google essentially is a cloud company, right? I mean आपने कभी Gmail का install करने मैंने तो नहीं कभी डाला है अगर वो आता भी है तो yeah, so a lot of this is internet based. So basically ये सारे compute engine on this side, which is like आप खुद मैनेज करना पड़ेगा. Firebase on the other side जहाँ पे आपको कुछ मैनेज नहीं करना पड़ेगा. Code lodge that is about it. बट ये लड़ाई तो सबने देखी है. मेरी मशीन पे चल रहा है एंड किसी और की मशीन पे नहीं चल रहा है. सो एवरीबॉडी नोज वेयर आर वी हेडिंग, राइट? तो बेसिकली हु कम्स फ्रॉम दैट, किसकी अब कौन डेवऑप्स कौन कौन सिस्टम एडमिन रहा है और उसके डेवलपर से लड़ाई हुई है उसका, है ना? और कौन डेवलपर रहा है और उसके सिस्टम एडमिन से लड़ाई है ना? तो दिस इज वेयर कंटेनर्स रियली हेल्प यू, राइट? तो मेरी मशीन पे चल रहा है तो तुम्हारी पे भी चलेगा, तुम्हारी मशीन पे नहीं चलता तो तुम अपना संभाल. Fine in dev ops problem now. And the containers are like really important in today's world because imagine, right, कि मैंने बस डब्बा बनाया और वो कहीं पे भी चला सकता हूँ. You can literally ship boxes from one place to another and it will continue to run the way it was running in, and that is like a really important signal to have. And it also speeds up the entire process, right? मतलब वो idea to production अगर आप उसको हफ्ते के अंदर ला पा रहे हो या 2 दिन के अंदर ला पा रहे हो, that is really important. Imagine time to market, business value, right? क्योंकि डेवलपर ने तो उतना ही काम करना है ना, महीने की सैलरी तो फिक्स है. So yeah, containers are really hot, and we continue to innovate. GKE, we will talk about all of this later. But yeah, containers is how you take your workload running on your laptop and take it to the cloud, and it continues to run. There are other innovations around it that Google has built. I'm sure everyone knows containers, right? But the basic idea is that you don't need, it is virtualization at the operating system level. So the application does not know नीचे क्या चल रहा है. नीचे आप चाहे Windows चला रहे हो या Linux चला रहे हो, उसमें Ubuntu है, CentOS है, कुछ भी चला रहे हो, application को नहीं पता नीचे क्या चल रहा है, because that is how name spacing and control C groups work. So they will kind of restrict application use. So that is the difference between an app and me. So again, जो लोग डेटा सेंटर से उनको पता है कि हाँ, अगर आप बैठे हो तो आप अपना पहले डेव एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे. अरे यार, हाँ, पहले आप अपना डेव एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, सेम इंस्टॉलेशन बैठ के आप अपने क्या कहते हैं उसमें प्री प्रॉड में कर रहे हो, फिर सेम इंस्टॉलेशन बैठ के आप अपने प्रॉड में कर रहे हो, और कुछ नहीं करना, सिर्फ ओएस इंस्टॉल करना है. सेम बाइनरी, सेम पैकेज उसको लगे हुए हैं 3 दिन तक पूरा वीकेंड और बात करना है ना? तो पर मैंने वीकेंड पे बहुत डिप्लॉयमेंट करी भाई, मेरे को नहीं करनी कोई. दैट इज व्हाई आई लव कंटेनर्स. चला भाई तो सब. तो या दैट इज वेयर कंटेनर्स लाइक रियली हेल्प. And one of the advantages that you get out of containers is microservices, because I can now not services for ads. I can if I have a social media app, I can split it between users, threads and posts. So users वाली टीम अपना अलग काम करती है, post वाली टीम अपना अलग काम करती है, and then they can continue to run. One of the other advantages that I get out of it is users वाली टीम बोलती है नहीं मेरे तो जावा में ही बनाओ जावा, और वो पोस्ट वाली सर्विस बोलते हैं कि नहीं मेरे पाइथन पे ही लोग हैं तो बनाओ पाइथन पे, क्योंकि अल्टीमेटली एचटीटीपी कॉल सेम है, या आप जीआरपीसी पे काम कर रहे हो या ग्राफिकल पे काम कर रहे हो, राइट? बट द मेथड मैकेनिज्म दैट यू कॉल इज कंसिस्टेंट, राइट? If that continues to be a norm in the organization, so you can essentially develop in any language, because कि आप एचटीटीपी कॉल मारोगे तो आपको रिस्पांस वही आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एज अ, जैसे है ना, फ्रंट एंड मैंने किसी में बना लिया, बैक एंड मैंने किसी में आ गया,
right? So this makes it easy, and then you can also, there are other advantages to it. कि अगर मेरे को कोई सर्विस है ज़्यादा देर चाहिए तो मैं उसको Go या C++ में डेवलप कर लूँगा. कोई मशीन लर्निंग का वर्कलोड है जिसका टाइम टू मार्केट का ज़्यादा एडवांटेज है, तो then I can possibly build it in Python because उसके frameworks already available है, right? So there are different advantages to building microservices, working with microservices. Again, basically one app is split it into multiple portions, and then each portion can scale, worked on, developed on individually. So that is what microservices are about. I have about one and a half minute or so, but मैं तो अपना पूरा टाइम दूंगा. One of the other advantage that you get is कि पुराना अगर कुछ वर्कलोड चल रहा है तो वो चलता रहेगा अगर वो कंटेनर बन गया. तो अगर Python 2.7 में किसी ने कुछ लिखा था और अगर वो भी JSON में HTTP कॉल वापस रिटर्न कर रहा है, that will continue to run. One of the things that happened during pandemic and nobody realized was कि US में ना, when a lot of people started filing unemployment के claims, right, वो कोड Pascal में लिखा हुआ था, right? और क्योंकि वो सर्वर इतने पुराने चल रहे थे, nobody had expected कि इतना ज़्यादा लोड आने शुरू हो जाएगा, इतना पुराना कोड लगा हुआ है और किसी फ्रेमवर्क पे चल रहा है, एंड अब इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऑफ कोर्स वो कोड फटने के चांसेस हैं, और वो फटेगा, वो फटा भी था शायद, पता नहीं. But the best thing that the team did was that package that entire code into a container और वो cloud run पे चल रहा है, right? So that is like one of the advantages कि वो इतना पुराना कोड भी you are still able to execute and package it into a container and still continue to run. नहीं, मैं तो अपना पूरा टाइम दूंगा, मजाक कर रहा हूँ. पर मैंने तो अपना कोड कंटेनर कोड में ले आया, तो मैं एक माइक्रो सर्विस ले आया, 2 ले आया. थैंक यू, बड़े अच्छे. बट हाउ डू आई कंटिन्यू टू रन इट, राइट? मेरे 2 कंटेनर तो नहीं होने वाले, मेरे तो 10,000 होंगे, मेरा तो $1 billion का एम्पायर है, काश होता. तो कंटेनर नॉर्मली नहीं चलते हैं, राइट, आज की डेट में. उसके लिए आपको कुबरनेटिस चाहिए. Right? So how do you continue to run containers at scale? Right? Kubernetes helps you do that. Kubernetes is a container orchestration. Containers को आपस में डांस कराना, तो बेसिकली बात कैसे करेंगे वो लोग आपस में, राइट? वो Kubernetes का काम. And you basically give it a container, वो चला देता है. It takes in a YAML and it says that you tell it कि ऐसे container चलाना है, वैसे चलाता रहेगा, and it will continue to make sure कि आपके resources सही से utilized हैं या फिर पैकिंग सही से हो रही है, आपस में बात कर पा रहे नहीं बात. बिकॉज अदरवाइज लोग क्या करते थे, अगर एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से बात करवानी है तो उसमें एक प्रॉक्सी बनती थी, तो वो आपस में बात करेंगे, आपस में फॉरवर्डिंग रूट सिक्योरिटी के लिनक्स के उसमें, तो एक बार ट्रैफिक आगे जाएगा, ये वाला ट्रैफिक इधर जाएगा, ये जाएगा नहीं जाएगा, उसमें बहुत सारा वायरिंग का बहुत काम होता था. Kubernetes make sure you don't have to do that, right? हम फैला रहे हैं इसको, मैं सच बता रहा हूँ, हमारा तो बहुत दिख रहा है. ठीक है, तो बुलाकर दिक्कत हो रहा है. तो GCP पे we continue to support containers and Docker as a default platform, and that is also, I think, a better way to do things, because it makes management a lot easier when your things are on Kubernetes, they are Dockerized, and you continue, because यहाँ से मैंने push करा, and then all of these things I can automate easily, because किसने शेफ की Ansible में scripts लिखी है, right? So we understand कि है ना, वो ऑटोमेशन का जो प्रोसेस है कि यार ये वाली चीज वहां चली जाए बस कुछ कोड लिख के, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो Kubernetes मेक श्योर वो चलता रहे, उसमें ऑटोमेशन इजी हो जाती है. कैन राइट सिंपल बैश इंस्टेड ऑफ राइटिंग इतना लंबा Ansible का YAML जस्ट टू मेक श्योर कि डिप्लॉयमेंट हो जाए. मैंने एक बारी Ansible की YAML लिखी थी और अगले दिन मेरे पास लोग आ गए थे कि तुम मेरी जॉब खा जाओगे, मैं निकल गया जॉब से. This is what a Kubernetes architecture look like, right? I'll explain. इसमें एक कंट्रोल प्लेन होता है, 2 नोड होते हैं. मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है? तो Kubernetes बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. Even though it makes jobs easy, it makes the job easy for people. It is still very complicated to operate. So that is where GKE comes in.
how do you run production grade Kubernetes? That is what GKE does. So GKE will manage all of the entire infrastructure for you, right? It will provision nodes, master nodes, control plane उसमें दिखता भी नहीं master control plane उसमें दिखता भी नहीं. You only get the control plane node and it's like very flexible. There are other fancy things like ASM, STO, all of this comes in baked in. So you don't have to like provision or manage or upgrade Kubernetes. 1.24 से 1.25 को अपने आप you provision a window and it automatically take a lot of these things are taken care for you by default. And because 30% of Kubernetes development, while it is open source, is still being done at Google actively, right? अगर Kubernetes का तो देखोगे the developers this by company, so 30% of development is still being done at Google. So we have that we know how to run Kubernetes because we know it. We also know how to run. Yeah, but this was one slide that I wanted to talk about. But Kubernetes से भी क्या, right? The advantage that you get out of containers is कि आप abstraction layer बढ़ाते जा रहे हैं, right? So I can tell you if someone is a system admin, the better way is to look at higher levels of abstraction because ultimately what you want to do is eliminate the friction between code and delivery, right? क्योंकि Kubernetes पे चल रहा है, VM पे चल रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, right? But आप बनाते क्या हो और आपका कस्टमर उसको कैसे लेता है, उसमें लेटेंसी कितनी आती है, उसमें मैनेजमेंट कितनी है, क्या वो हर टाइम अवेलेबल है ना? वो सब चीजें मैटर कर जाती हैं. दैट इज व्हाई serverless solutions are like really important. So basically we are abstracting on a higher layer. On infrastructure से भी ऊपर जा रहे हैं, बस कोड चलता है, हमें नहीं पता कहाँ चलता है, किस सर्वर पे चलता है, हमारे को नोड भी नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, right? So that is where serverless systems are there, right? So a lot of systems are going serverless. Serverless does not mean that there are no servers, as against common misconception. Servers होते हैं but दिखते नहीं हैं, right? And it is made of servers. It is no server for you to manage. Like that is the only difference between server. That is the only difference between running an IaaS or a container as a service platform versus serverless. Because कोई server आपको खुद manage नहीं करना होता. And config management भी नहीं करनी पड़ती. मतलब आप कुछ थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो कि नहीं ये डेटाबेस से ये कनेक्ट होगा या फिर ये वाले नेटवर्क से बाहर डेटा नहीं जाएगा, राइट? देयर इज सम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दैट यू कैन डू. एसेंशियली सर्वलेस में ये सब नहीं करना पड़ता, राइट? सो यू जस्ट गिव इट Heroku, App Engine, Cloud Run, any other serverless platform. Yeah, मुझे नहीं पता, ठीक. तो yeah, that is all of this config management, क्योंकि किसको पड़ी है readiness liveness group वगैरह सब सेट करके बैठे हैं, बहुत मेहनत का काम है. मैं तो serverless platforms abstract in the server, so you don't have to care about DevOps, delivery कहाँ से किस server पे जाएगी, auto scaling वगैरह, उसकी cold start may be a problem, but then again a lot of serverless platforms provide you that option to form your systems ताकि latency ना आए, early release ना. And you basically don't have to do anything with regards to, say, serverless systems. Last, right? Gamer is happy. Yeah, how do I get started with Google Cloud? So if you're a student and बहुत सारे students की problem है कि credit card लेना पड़ता है, there is a hackathon toolkit, you can go sign up. Credit card नहीं लगता, you can definitely do that. Right? I built an entire career out of a certificate. मैंने पहले certificate and then I got a job and then somehow community helped, right? Definitely for sure, but somehow like it all started with certificate. I tell you something really interesting. तो मैं बात कर ही रहा हूँ. तो मैंने जब कम्युनिटी में पहला अपना इवेंट आया था ना, और मैं आया ये सोच के था कि यार मैंने सर्टिफिकेशंस करे और मैं और सर्टिफाइड लोगों से जाके मिलूंगा और बात करूंगा. फिर जब मैं पहुंचा तो मेरे को रियलाइज हुआ मैं अकेला सर्टिफाइड हूँ. तो वहाँ से मेरे को लगा कि यार और लोग होने चाहिए, तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प मोर पीपल. So yeah, other ways that you can get onto a Google Cloud job, or if you're in a role that if you're in a different role and you want to switch to Google Cloud appropriate role, certifications would help. Like they would at least establish some level of authority. Let's say door opener तो हो जाएगा ना कि हाँ कर